हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार PYP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ फ्रॉम द बुक। ये किरण पब्लिकेशन की है, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। यू कैन टू, तुम भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, वहाँ से तुम इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। एनीवे, इस बुक से ही मैं प्रीवियस ईयर देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा मोटा बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। ऐसे तो मैं करवा ही रहा हूँ इस बुक से, लेकिन तुम्हें लगता है या नहीं यार, मैं खुद भी इस बुक को परचेज़ करना चाहता हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम इस बुक को बहुत ईज़िली परचेज़ कर सकते हो। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। It's going to take time to conduct CVT1. Still, you have good number of days to, if you want to crack Rrb Ntpc 2020, right? So if you want to, you can go to मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करो, परचेज करो, रीड करो और क्रैक करो। वाओ, isn't it so simple? It is so simple, so don't make it complicated by one day I will purchase, and that day is not going to come that for sure, because there is no one day or that day. It's just a matter whenever the requirement comes, whenever it's just like it's all about a strong determination. If we have the strong determination to crack anything or do want anything, you don't even think for twice a day or one day or this or that day I will do this or that. Anyway, so मैं आज यार 28 मार्च 2016 में NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, उसका मैं GA और GS पोर्शन अभी मैं यार बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला, ट्रस्ट में। आई एम गोइंग टू take so many questions for you. All you just need to take paper and pen and whatever the stuff. I have taken the pencil. If I will find any question that is, or if I will not find the things are not good enough, अगर कोई information मुझे add करना होगा तो ये मेरे लिए भी handy है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक opportunity है to learn the things as well as like I have I have mentioned many things in this paper as well, as you can see through figures and all. So मैंने भी इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। सो चलो यार थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। पढ़ाई इज़ एंटरटेनमेंट व्हेन यू टेक एंटरटेनमेंट एज पढ़ाई। व्हाट? या यू हर्ड इट राइट। एनीवे, थोड़ा यार चलो यार क्वेश्चन पे जंप करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, राइट? तो पहला क्वेश्चन है यार, एक पॉलीगन है जिसके 7 साइड्स है, उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर एक पॉलीगन है उसके 7 साइड्स है, उसको क्या बोलोगे? हेप्टागॉन बोलोगे ना? हेप्टागॉन। अगर 5 साइड्स है पेंटागॉन, अगर 8 साइड है तो ऑक्टागॉन, राइट? दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज रॉलेट एक्ट पास? रॉलेट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? 1919 में पास हुआ था। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, राइट? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज द गोल्डन टेम्पल डम्बुला लोकेटेड? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल? एक गोल्डन टेम्पल तो आई थिंक इंडिया में हो तो पता ही होगा यार, अमृतसर में है, मैं वहाँ पे गया हूँ। इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ गुड प्लेस टू वर्शिप, इज़ अ गुड प्लेस टू get the blessing of God, and that is a different story altogether, right? So where is the golden temple Dambula located? This is in
श्रीलंका। और ये बेसिकली चाइना के आर्किटेक्ट ने बनाया था और इसके लिए श्रीलंका ने बहुत हैवी अमाउंट स्पेंड किया था, राइट। नेम द बॉक्सर हुज nickname is the real deal. नेम द एक ऐसा बॉक्सर का नाम बताओ जिसका जो निकनेम है द रियल डील है। सो दैट बॉक्सर नेम इज इवेंडर हॉलीफील्ड। इवेंडर हॉलीफील्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन is any question left? No. Who is a hacker? हैकर कौन होते हैं? सो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर एंड मैं बहुत स्लोली तो नहीं लेकिन एक ठीक है स्पीड के साथ चल रहा हूँ सो दैट कि तुम्हें विदाउट ऑप्शन दिए उसमें टाइम वेस्टेज बहुत होता है। मेरे लिए भी टाइम वेस्टेज है, तुम्हारे लिए भी टाइम वेस्टेज है। एक ऑप्शन के साथ वो आदत हटाओ, यू नो, व्हेन यू डोंट हैव द ऑप्शन your minds work in a much faster way instead when you get the answer or you know like options and all, right? So who is a hacker? So answer is person who uses computer to gain unauthorized access to data। यही होता है ना हैकर। हम बोलते क्या बोलते हैं उसको, तुम पासवर्ड ये थोड़ी देते लेकिन तुम्हारे पासवर्ड को हैक कर लेता है ना। एम्परर अशोका वॉज सक्सेसर ऑफ, किसका सक्सेसर था यार? एम्परर अशोका वॉज सक्सेसर ऑफ बिंदुसारा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेजर्ट adjoining the Thar desert in Pakistan is known as Cholistan, right? The desert होता है वो जिसको हम जो खाना खाते हैं उसके बाद जैसे यार रसगुल्ला हो गया, इज अ डेजर्ट, right? So this is a desert, right? So desert adjoining the Thar desert in Pakistan is known as Cholistan, right? Next question I have for you is when did Vasco da Gama land in India? Vasco da Gama ने पहली बार इंडिया पर पैर कब रखा था? तो पहली बार वो इंडिया आया था 20 मई 1498 को, राइट। 20 मई 1498 को। XC6 डिनोट्स व्हाट? क्या डिनोट करता है यार? तो दिस इज अ रीजनिंग क्वेश्चन। Anyway, I have to search out GS and GA question, right? Who invented penicillin? Alexander Fleming. This is something what everyone knows, right? So, Karnam Malleshwari is associated with which sports? एक क्वेश्चन तो रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई भी स्पोर्ट्स क्वेश्चन दे देगा और वो पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है या थी। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो वेट लिफ्टिंग ही कर दिया ना, वेट लिफ्टिंग कर दिया। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब मनाते हैं यार? कब मनाते हो? World Tuberculosis Day we celebrate on 24th March of every year, right? So 24th March को हम World Tuberculosis Day celebrate करते हैं, right? So who of the following rivers is known as the sorrow of Bengal? sorrow
कोशी इज़ द सॉरो ऑफ बिहार एंड बंगाल का जो सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं दैट इज़ दामोदर, राइट, दैट इज़ दामोदर. Arteries carries blood that are filled with arteries carries blood that are filled with उसमें क्या भर रहा था ऑक्सीजन, राइट. When was the Indian Constitution amended for the first time? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड कब किया गया था? अमेंडमेंट्स चेंज, सुधार जो कह सकते हो, कब किया गया था? 1951 को किया गया था, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 GB में कितने KB होते हैं? तो 1 GB में होता है 1 tens 100,000 and lakh. 1 tens 100,000 and 10 लाख KB होता है, राइट. How many moons does Mars have? मार्स के पास कितने सारे मून हैं? तो मार्स के पास 2 मून हैं यार, है ना. Which of the following was the first satellite to orbit our moon? So इसका आंसर क्या होगा? Which of the following was the first satellite? पहला सैटेलाइट कौन सा है जो ऑर्बिट आवर मून? Luna 10, right? What is the capital of Cyprus? Cyprus. What is the capital of Cyprus? Yeah, one thing you can do is whatever the answer of any of the question you know, just comment down below so that you can check how many questions you know, so that it is good for you to assess yourself. So right, so do this, it is good for you. I'm just suggesting you whether you want to do it or not. This is totally up to you, right? So what is the capital of Cyprus? Is Nicosia. Nicosia is the capital of Cyprus, right? Mrinalini Sarabhai, who passed away recently, was associated with किस चीज़ से एसोसिएटेड थे? पहली बात तो तुम्हें ये जानना होगा कि मृणालिनी साराभाई कौन थी, पर्सनालिटी, किस फील्ड से एसोसिएट करते थे. बेसिकली क्वेश्चन भी यही है. सो एक क्लासिकल डांसर थी, राइट. Who has given the slogan "Do or die"? This is very easy. Mahatma Gandhi. What causes tsunami? Harbor wave. Tsunami को harbor wave भी कहते हैं. Tsunami क्यों आता है? Under sea earthquake. Under sea earthquake के कारण आता है, right? So what is the function of lens in our eyes? Function क्या होता है लेंस का हमारी आँखों में? Change the focal distance of the eye. Change the focal distance of the eye. ये रोल होता है हमारे लेंस का हमारी आँखों में, right? Name the 2 teams that played the first official international cricket match, right? Name the 2 teams that played the first official international cricket match. That is Canada and America. Who is believed to have built Konark Temple? Narasimha Deva first. Narasimha Deva first, right? In 2014, the Lok Sabha was in 2014 the 16th Lok Sabha was elected. या 17th Lok Sabha में मोदी ने फिर से मोदी 2.0 स्टार्ट हुआ था, राइट.
सो फोटो जो तो 2014 में मोदी ने जीता था, क्लीन स्विप किया था, वो था तुम्हारा 16th लोकसभा इलेक्शन, और जो 2019 में हुआ है दैट इज 17th लोकसभा इलेक्शन है, राइट। Which of the following is an example of single cell organism? Protozoa, right? In which state are the famous Kerala Buddhist cave located? That is in Kerala Buddhist caves located in Maharashtra, right? The scientific study of preserved remains or traces of animals, plants, and other organisms from the remote past is called what? Is called paleontology. एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ so that you can understand the question in a far better way, right? The scientific study of preserved remains or traces of animals, plants, and other organisms from the remote past is called paleontology. तो इसका मतलब हो गया paleontology, right? Who invented the thermoscope? Thermoscope is invented by Galileo, right? 1 decaliter is equal to how many liter? 1 decaliter is equal to how many liters? So this is 10 liter. In India, who is executive head of the state? Of course, governor होता है यार. What is the shape of the earth? Oblate sphere. What is the shape of the earth? Oblate sphere, right? In the acronym BRICS, the term B is Brazil. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है. ऐसे ब्राज़ील ब्रिक्स का मैं यहाँ पे फुल फॉर्म जरूर बताना चाहूँगा. B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S is for South Africa, right? So what is Aruna Ashraf Ali is remembered for hosting the INS Indian National Congress flag at Bombay, right? Aruna Ashraf Ali, right? What was the name of Maharana Pratap horse? Chetak. Very common question. Very. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. कुचिपुड़ी जो डांस है वो एक कहाँ का है? कुचिपुड़ी इज जैसे भांगड़ा पंजाब का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, राइट? इफ frequency of a wave increases, its wavelength decreases. इस पिक्चर में देख सकते हैं. इस पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मेंशन किया गया है, और मैंने इसका जो ये है आंसर भी एक अच्छी तरीके से थोड़ा सा मेंशन किया. व्हेन देखो आंसर मैंने खुद ही राइट इट डाउन किया ना. सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस मोर वेव क्रिस्ट. अब ऐसे जो बनता है, जो ऐसे बनता ऊपर का उसको क्रिस्ट, और जो नीचे का बनता है उसको कहते हैं वेव ड्रॉप, राइट? TROUGS, वेव ड्रॉप, वेव ड्रॉप. ऊपर का क्रिस्ट, नीचे का वेव ड्रॉप, राइट? और एक जो वेव के अंदर एम्पलीट्यूड बनता है, इस फिगर में बहुत क्लियरली मेंशन है, राइट? सो पास अ फिक्स पॉइंट each second, that means the wavelength shortens. So as frequency increases,
wavelength decreases, opposite is also true as frequency अगर decrease करता है तो wavelength increase करता है, right? तो यहाँ पे question क्या था, if frequency of a wave increases, its wavelength decreases, right? Which of the following is the smallest continent? Australia is the smallest continent and the biggest one is none other than Asia, right? Which of the following is known as marsh gas? Methane is known as marsh gas and methane is what? CH4. So this is the end of the 28th March 2016 पेपर। क्वेश्चन नंबर 78 में मैंने जैसे क्वेश्चन में पूछा था एस क्या था ब्रिक्स में, सो दैट वाज साउथ अफ्रीका, लेकिन मैंने 2016, 17, 18, 19 और 20 का डेटा मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे लगा था उसको अच्छी तरह और एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट? सो 15 to 16 अक्टूबर 2016 को इंडिया ने होस्ट किया था और प्राइम मिनिस्टर वाज द लीडिंग होस्ट पर्सन, राइट? क्योंकि यार हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, राइट? सो जो होस्ट लीडर था बेसिकली दैट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट? 3rd to 5th सितंबर 2017 की बात करें तो चाइना ने किया था, और चाइना के जो प्रेसिडेंट वो तो तुम्हें पता ही है, सी जिनपिंग, राइट? 2018 में साउथ अफ्रीका ने किया था और साउथ अफ्रीका ने 25 to 27 जुलाई को किया था 2018 को, और उसके जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामापोसा, राइट? तो 2019 की बात करते हैं, 13 to 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील ने किया था, जिसके जो प्रेसिडेंट है जेर बोल्सोनारो, Jair Bolsonaro, is not G, is Jair Bolsonaro, right? So और 21st to 23rd जुलाई 2020 को रशिया में होना था, जो कि उसको व्लादिमीर पुतिन जिसको 2036 तक की प्रेसिडेंशियल राइट्स मिल गई है, वो 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट रहने वाला है। आई मीन इट्स नॉट राइट, आई मीन एक चेंज तो चाहिए ही, एनीवे तो वो पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू कोविड-19, राइट? अब इस वीडियो में 31 मार्च 2016 को 3rd शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस पे हम अभी प्रकाश डालने वाले हैं, राइट? सो बाय विनिंग द women's double semi-final of the WTA, that is Women's Tennis Association Sydney International in January 2016, which record did Sania Mirza and Martina Hingis break? They broke a 22-year-old world record by winning their 29th women's doubles match in a row, right? The next question is when was the Namami Gange project announced by Narendra Modi? तो ये 2014 जुलाई में ही किया था। क्लीन गंगा मिशन जो एक तरह से नमामि गंगे नाम से जो हुआ था, बेसिकली गंगा जी जो रिवर है उसको क्लीन, क्योंकि हम ऐसे तो हम सभी रिवर को बहुत ज़्यादा एक डिवोशनल एक रिलीजियस काइंड ऑफ चीज़ से देखते हैं, तो लेकिन हमें
गंगा रिवर पे कुछ ज़्यादा ही आस्था है, डिवोशन है, एक हमें बिलीव है, राइट। सो हु इज़ चंदा कोचर, उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था। CEO एंड MD ऑफ ICICI बैंक इंडिया, राइट। Next question is, who is credited with discovery penicillin? Alexander Fleming. No doubt about it. Out of the following, which one does not have magnetic properties like permanent magnet? Lodestone. Lodestone में permanent magnet जैसी qualities नहीं होती है। Which out of the following contain ethanoic acid? Which out of the following contains ethanoic acid? एथनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। और ये किस में होता है, विनेगर में ही तो होता है ना। विनेगर में तो which of the following ships from Japan was in Chennai in January 2016 for a coast guard exercise between India and Japan? So उस शिप का क्या नाम था? इचिगो, right? Who is supposed to have said, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever? ये किसने बोला था, किसके लाइन थे? APJ Abdul Kalam, right? Whose autobiography is Life on My Terms? Surat Pawar, जो ऐसे बोलते हैं ना, he is from Maharashtra, if I'm not wrong. Ramesh Pawar is one of the cricketers, his son, right, if I'm not wrong. Anyway, what is an abalone? ABALONE. What is an abalone? क्या है? An edible marine snail. Snails की तरह धीरे धीरे चलते हैं ना। If any person is snails, मतलब he is running or walking is very slowly, snailing, हम बोलते हैं he is snailing, right? Anyway, oh man, what is the next question? Oh, there's no question here. The subatomic particles which sole property opposite to the general subatomic particle are called, क्या कहते हैं उसको? Let me read out the questions once again, right? The subatomic particles which show property opposite to general subatomic particles are called positrons. Positrons, POSITRONS, right? Positrons, right? Einstein's theory of special relativity was first proposed in the year 1905. Which village in Shivamoga district, Karnataka, uses Sanskrit in everyday communication? Is matur, right? Which village in Shivamoga district, Karnataka, uses Sanskrit in everyday communication? यार, हर दिन वो संस्कृत को यूज़ करते टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वाओ, no, I'm not able to understand Sanskrit, right? So if you know Sanskrit, comment down below, right? Anyway, so the village is mature, right? Pick the correct sequence of computer generation from 1st to 5. 5 generation. We are right now using the 5th generation computer, right? So first was
vacuum tube. Second generation was transistor. Third was integrated circuit, that is IC. Fourth was VLSI microprocessor, that is VLSI is very large scale integration microscope. And the fifth generation microscope, fifth generation computer, we are using these are of ULSI, that is ultra large scale integration, ultra large scale integration, right? Who is the author of Panchasiddhantika Brihat Samhita and Sankhya Siddhanta? Who is the author of? Oh my God, the book name is so complicated, so difficult to pronounce. It is not easy for me to pronounce so easily. Anyway, who is the author of Pancha Siddhantika Brihat Samhita and Sankhya Siddhanta? So the author is Hira. Vara Hami Hira, right? The common language spoken in Tamil Nadu and Sri Lanka is Tamil. The story is, of course, it is. Dash is the longest chord of a circle. सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है सर्कल में क्या होता है? वो डायमीटर तो होता है। अब क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, यहाँ कॉर्ड बना रहे, यहाँ कॉर्ड बना रहे, लेकिन जो सेंटर है वहाँ से ये पूरा मिला रहे, इसी को तो डायमीटर कहते हैं। और सेंटर से जो सर्कल होता है उसको रेडियस कहते हैं, राइट? तो वो हो जाएगा, है ना? Which city will host the 2020 Summer Olympics? Tokyo, Japan, no doubt about it, right? How many times does hour hand and minute hand overlap in 24 hours? It is 22 times, right? A major tectonic plate, the Indian plate where India is situated, is split off from which ancient continent? Is split off from which ancient continent? Gondwanaland, right? Who is Jacqueline L. Chopa Guzman? Who is Jacqueline L. Chapo Guzman? Who is Mexican drug lord, right? Mexican drug lord. What is English EV? What is English EV? क्या होता है? What is, क्या है ये? A common poisonous plant in USA. Humans belong to the class Mammalia. To which one of the following does not belong? Humans belong to the class Mammalia. To which one of the following does not belong? Is lizard. The Terracotta Army, a collection of terracotta sculptures, depict the armies of the first emperor of which country? China. What is melioidosis? What is melioidosis? Infectious disease. जो इन्फेक्शन से फैलता हो, वो डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट? What is
Who is Guru Shikhar, highest peak in the Aravalli range? Okay, it's not who is, what is Guru Shikhar? एक्चुअली स्पेलिंग इज़ रिटन, इस बुक में जो स्पेलिंग है थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हु चेंज कर दिया। एंड गुरु शिखर इज़ समथिंग, किसी इंसान का नाम लग रहा था इसलिए मैंने हु बोला, लेकिन द क्वेश्चन शुड बी, एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ गुरु शिखर, राइट। हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज, व्हाट इज़ माइकोलॉजी? माइकोलॉजी इज़ क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगाई। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी, राइट। सो फॉर बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, वायरस वायरोलॉजी, पैरासाइट पैरासिटोलॉजी, एंड study of fungi is mycology. Involuntary muscles in a human body are present in heart. Involuntary muscles in a human body are present in heart, right? On which hill is the famous Tirumala temple situated? Venkatadri, right? Venkatadri is the hill Tirumala temple situated. Which Indian researcher recently disputed Einstein's mass energy equation? Is quantum is inadequate and valid only under certain conditions? Ajay Sharma, right. Who are Bodhayana, Manva, Upasthamba, and Katyayana? All are ancient Indian mathematicians, right. Rrb was also a mathematician who discovered zero, right. What is estivation? एस्टिवेशन क्या होता है यार? AESTIVATION। एस्टिवेशन क्या होता है? एनिमल डॉर्मेंसी, एनिमल डॉर्मेंसी को कहते हैं एस्टिवेशन, राइट। सो एनी अदर क्वेश्चन? या देयर सो मेनी अदर क्वेश्चंस लेफ्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अर्थवर्क एंड वुल्फ? क्या मतलब, क्या डिफरेंस होता है? अर्थवर्क एंड वुल्फ। Aardvark resembles a pig की तरह दिखता है, whereas aardwolf जो होता है हाइना की तरह दिखता है, राइट। India is a republic. What does republic mean? The head of a state is elected indirectly by its people, right. The head of a state is elected indirectly by its people, right. The Brideshwara temple, जो कि Thanjavur तमिलनाडु में है, was built with what type of material? Granite से बना हुआ। That's great. A set of beliefs and practices that aims at improving the genetic quality of the human population is a field of genetics called eugenetics. EUGENICS, right. What do you understand by प्रवासी भारतीय दिवस? जब यार महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे,
उस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, राइट? The answer here written is a day commemorating the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Bombay on 9th January 1915, right? LED and CFL lamps are replacing ordinary bulbs for lighting because of their energy efficiency होती है ना यार, बिजली भी कम खाती है, पैसे बचते हैं, बहुत सारे फायदा होते हैं, right? Who among the following Prime Minister was born after India gained independence? Narendra Modi. What is geodesy? Geodesy क्या होता है? Branch of mathematics dealing with the shape and area of Earth. Who was the first to isolate DNA? DNA को पहले isolate किसने किया था? Friedrich Meiser. Friedrich Meiser, right? So the answer is Friedrich Meiser, yeah, is the first to isolate means अलग करना, segregate करना DNA. So this is the end of this video. Tomorrow I will take 2 more shift of Rrb Ntpc prelims questions are concerned, PYP is concerned. So this is the day first. I hope तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस नए पते चले होंगे. और इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक, आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक. इफ़ यू वांट टू परचेज, आई एम गोइंग टू गिव द लिंक ऑफ दिस बुक एंड यू कैन ईजिली परचेज. इस बुक को तुम परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से ईजिली परचेज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.